study about some disease caused by fungi. Fungus belong to mycology. We can say that mycology is the branch of biology deals with the study of fungus. And as you know very well, nowadays fungus affect the people vigorously because they have the resistance power against the anti-drugs. Fungus has the resistant power against the antifungal drugs, and they show the phenomenon of the natural selection. So today we discuss about some commonly occurring fungus in the people of the world. So first of all, ringworm. The disease ringworm, also known as tinea. This disease is caused by dermatophytes. That is, they have the three genera. That is Mycosporum, Epidermophyton and Trichophyton. All these three genera cause ringworm. Ringworm जिसे कॉमन भाषा में दाद भी बोलते हैं, दाद. Now, mode of transmission. Transmission by soil, because this fungus abundantly occur in the moist soil, by using the towels, cloths and combs of the infected person. यानी कि जो infected person towel, comb, कंघी और जो क्लोथ्स वगैरह इन्फेक्टेड पर्सन के, कोई हेल्दी पर्सन यूज करता है तो उसमें आसानी से ट्रांसमिशन इसका हो सकता है. नाउ सिम्टम्स. Mycosporum, actually all these three genera show different symptoms. Mycosporum show the scalp and skin. They affect the scalp. जो सिर के जो खाल होती है बालों के नीचे, the skin of the under hair, scalp और skin को affect करता है. Epidermophyton affect the skin and nails only and not the hair, scalp, while Trichophyton affects scalp, skin and nails. Other symptoms including dry scaly license on the body. रेड कलर के रैशेस चकत्ते हो जाती हैं पूरी बॉडी पे जहां भी इफेक्टेड बॉडी होती है, स्पेशली बिटवीन द फिंगर्स, बिटवीन द टोज, है ना, एंड स्कैल्प एटसेट्रा. Scalp on the body including skin, nails etc. with intense itching. उसमें खुजली भी आती है ना. These are the main symptoms. Now prevention and control. Avoid sharing of the personal items like towels, combs etc. Always wear the clean socks. Avoid to live in the moist condition. As you know that fungus frequently grow in moist conditions and high temperature up to 35 degrees Celsius temperature. Now, second fungal disease is the aspergillosis. Causative agent of aspergillosis is the aspergillus fungus. Now, transmission mode affects the respiratory system. This fungus generally affects the respiratory system, grow on decaying vegetables and dead leaves. It lives indoor, outdoor, and people inhale the spores of fungus frequently. But this is not necessary that each and every people who inhale the spores of this fungus get sick. It is depend on the immune power of the person to person. Now, diagnosis and symptoms. Fever, hemoptysis, that is cough with blood. These are symptoms. खांसी के साथ blood का आना, blood clots का आना. Shortness of the breathing, छोटे छोटे सांस, यानी कि लंबा सांस व्यक्ति नहीं ले सकता. Then chest or joint pain, etc. These are the main symptoms of the disease. Now, people with the weakened immune system or lung diseases are at the high risk to spread this disease. यानी कि जिनकी इम्यून पावर कम होती है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स डिसीज इसके अंदर होती है, वो प्रायन टू दिस डिसीज, उनमें जल्दी से फैलने के आसार उनमें होते हैं. नाउ
prevention and control. Antifungal drugs like voriconazole and amphotericin B after the सब्सक्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर, यदि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है इसे उसके बाद ये ली जा सकती हैं. साइड इफेक्ट्स, बिकॉज द साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स may damage the kidney, heart and lungs, etc. So these are the side effects. These are the side effects of the antifungal drugs. तो जल्दी से antifungal drugs नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की राय से ये दवाइयां मेडिसिन लेनी चाहिए. Now third disease is the candidiasis. Candidiasis is caused due to the Candida albicans. This is a kind of yeast. Transmission mode usually from mother to infants through parturition. Means child birth के समय जन्म लेने वाले बच्चे को उसकी मदर से होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. एज वेल एज थ्रू पर्सन टू पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को भी ट्रांसमिट हो सकती है यदि वो उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं. नाउ डायग्नोसिस एंड सिम्टम्स. इन्फेक्शन ऑफ द माउथ, थ्रोट एंड इजोफेगस. जनरली मुंह, गला और इजोफेगस जो आपका फूड पाइप है उसमें ये फंगस पाया जाता है, उससे इन्फेक्ट करता है. इट क्रिएट द प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम व्हेन एंटर्स डीप इन द बॉडी. जब डीपली घुस के बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है फंगस, जस्ट लाइक इन ब्लड स्ट्रीम, ब्रेन, हार्ट और किडनी. जब ये वहां तक चला जाता है तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो अचानक उभर के आते हैं एंड दिस इज वेरी वेरी डेंजरस कंडीशन. Now prevention control. Many of the candida are resistant to antifungal drugs. इनमें antifungal drugs के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर क्रिएट मतलब हो रही है और हो चुकी है ना. To treat them now natural, it is a kind of natural selection, that is resistance against chemical. Now multivitamins, green leafy vegetables, fruits, vitamin C and antioxidants may be taken frequently to avoid the symptoms of the disease. So here we study about the three important common human fungal disease. I think you go through all these frequently. Thank you and have a nice day.